Namaskar and warm welcome from Exec Test team. मैं हूं दीपम and today we're gonna start our 7th session of current affairs which is very important again because हम ऐसे current affairs को अधिकांश ढूंढते हैं, हमारी टीम ऐसी current affairs को ढूंढती है जो कि ट्रेंड में हो, right? So here are table of content in front of you, starting with the very first. It's from GS2 International Relations that UK becomes the first country to approve Omicron vaccine. देखिए ये करंट अफेयर्स जो है अगस्त मंथ से है, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं। कई सारे डाउट्स और कई सारे मैसेजेस मेरे पास ऐसे आए हैं जिनमें कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो अब हो चुका है, या फिर ये वाली चीज तो ऐसी नहीं है, कुछ और है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हम अगस्त मंथ, हम पास्ट में चल रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं, राइट? ऑल्दो इट्स कमिंग टू यू राइट नाउ बट इट्स फ्रॉम अगस्त मंथ। हो सकता है आने वाले मंथ में इसको हम मॉडिफाई करें, अगर कोई नई न्यूज होगी या फिर कुछ मॉडिफाइड न्यूज होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा उसमें करंट अफेयर में कि यार ऐसा ऐसा है। Up till then, please bear with me, please bear with the current affairs. So first one is our UK becomes the first country to approve Omicron vaccine. Second is from GS3 Security and Disaster Management. India's Panch Pran target for next 25 years. Panch Pran जो है हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हम 25 साल में जो 100 इयर्स कंप्लीट करेंगे आजादी के, अप टिल टारगेट इंडिया का ये है कि हम लोग डेवलप्ड कंट्री बन जाएं। तो वो क्या है हम और डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा जीएस पेपर 2 अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस, यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट 2022। यूएस ने एक इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पास किया है। नाउ व्हाट दैट इज, क्यों है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव फ्रॉम जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट, cause of Arctic warming. Now, what is Arctic warming? We are not talking about global warming. We are not talking about Arctic warming. So, what it is, we'll discuss in that. Number 5th is a government scheme Namaste. है ना, उसके की फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये नमस्ते क्या है, कैसी स्कीम है, विल डिस्कस इन दैट। एंड द सिक्स्थ वन इज फ्रॉम जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पोर्शन एंड दैट इज व्हाट आर पीएफएस और फॉरएवर केमिकल्स। विल रीड अबाउट इट, विल नो अबाउट इट एंड काइंडली ट्राई टू मेक अ शॉर्ट नोट। मैंने इफ यू आर मेकिंग फुल नोट्स, है ना, आप में से कई लोग हैं जो कि पूरे पूरे नोट्स बना रहे हैं, है ना, पूरा पीपीटी लिख रहे हैं। ऐसा मत करिए, एक दो बुलेट पॉइंट्स लिखा करिए। जैसे कि हम अभी बात करने वाले हैं फर्स्ट, मान लीजिए ओमिक्रॉन वैक्सीन के बारे में, तो आप सिर्फ ओमिक्रॉन वैक्सीन और यूनाइटेड किंगडम बिकेम द फर्स्ट टू डेवलप द वैक्सीन फॉर ओमिक्रॉन, इट्स अ वेरिएंट ऑफ कोविड। तो आप सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट इक्वल टू यूके वैक्सीन फर्स्ट डैश, ऐसे ऐसे बुलेट पॉइंट्स। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, यू कैन मेक योर ओन आल्सो। ओके, सो इस तरीके के आप बुलेट तरीके से बनाइए। आप में से कई लोग हैं जिनने पूरा पूरा पीपीटी या फिर जो मैं समझा रहा हूँ उसको लिखने लग जाते हैं साथ में। नहीं, ऐसा मत करिए। दिस नोट्स विल नॉट हेल्प यू, ठीक है, दिस नोट्स विल नॉट हेल्प यू, इट विल जस्ट क्रिएट अ बॉदरेशन फॉर यू व्हेन योर एग्जाम विल कम। So don't do such mistakes. So start with the very first, Omicron vaccine. The United Kingdom has authorized the first ever COVID-19 vaccine for Omicron variant, the first country to do so. इस करंट अफेयर में पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतना ही आप अगर जान लें तो मोर देन इनफ है। खैर, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं क्या, ताकि और ब्रीफ में आपको अच्छे से समझ आए, लेकिन अगर इतना ही आपने याद रख लिया दैट्स मोर देन सफिशिएंट। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स फॉर इट? कंडीशनली ऑथराइजेशन for vaccine was granted by Medicines and Healthcare Products Regulatory Authority. It was also the first authority worldwide to approve original COVID-19 vaccine, okay, which it is Medicines and Healthcare Products Regulatory Authority. याद रख सकें तो मेंस में लिखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी। Moving on, authorized vaccine caters to original as well as Omicron BA.1 strain of coronavirus, okay, BA.1 strain जो सबसे पहले आया था, okay. Omicron variant is placed in the most troubling category of COVID-19 variants, along with the globally dominant Delta plus its weaker rivals like Alpha, Beta and Gamma. See, Omicron इंडिया में भी हिट करा था। अभी हाल फिलहाल, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, फेब की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, जनवरी दिसंबर, आपने देखा होगा चाइना में बहुत ज्यादा कहर मचा दिया था, है ना। ऐसा क्यों हुआ था चाइना में, काफी लोग पूछते हैं। मैं आपको इसका सीधा सा एक जवाब देता हूँ। When the whole world was isolated or was bearing this COVID variant, जब पूरा विश्व इस वेरिएंट को झेल रहा था, लोग मर रहे थे, तब चाइना ने लॉकडाउन लगा दिया, ओके, एंड पूरा कंट्री लॉक कर दी बाहर से भी, ओके, कि कोई नहीं आएगा, नो अदर फ्लाइट, कंट्रीज पे रिस्ट्रिक्शंस, फ्लाइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो उनके यहाँ पर ये वेरिएंट जो है इतना ज्यादा घातक उस समय नहीं हो पाया, एंड बाकी पूरे दुनिया में ये वेरिएंट ने बहुत तहलका मचाया। बट इससे क्या हुआ, पूरी जो वर्ल्ड था उस वक्त, उन लोगों ने जो सिचुएशन फेस
उस समय करी। आज चाइना जब ओपन हुआ है तो ऑब्वियसली वेरिएंट वहां गया, एंड पूरी दुनिया ने उस समय जो चीज फेस करी आज चाइना ये चीज फेस कर रहा है, बिकॉज पूरी दुनिया में तो वैक्सीन लग गए, लेकिन पूरी दुनिया में वैक्सीन के अलावा एक चीज और हुई, इम्यूनिटी डेवलप हो गई लोगों में। तो वहां तो इम्यूनिटी डेवलप हो गई, इंडिया में भी इम्यूनिटी डेवलप हो गई, इसलिए हम लोगों को या किसी और कंट्री को प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आज चाइना को ज्यादा प्रॉब्लम। मूविंग ऑन, this variant has a large number of mutations. Some of them are cause for serious concern because they may allow the new variant to evade immunity obtained from a past infection or via a vaccine. ओके क्यों ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। म्यूटेट का मतलब होता है बहुत जल्दी, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, 16 के 32, है ना, मतलब एक के टू, टू के फोर, फोर के एट, एट के 16, इस तरीके से ये म्यूटेट बहुत जल्दी 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 होता है। ठीक है, म्यूटेशन स्पीड ज्यादा है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी फैलता है लोगों में, है ना। सबसे पहले जो कोविड आया था, सबसे पहला वेरिएंट जो आया था, आई विल नॉट गो इन डीप, बट जब सबसे पहला आया था तो उसको फैलने में थोड़ा टाइम लग रहा था, फिर नया वेरिएंट आया वो और जल्दी फैलने लगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट जब आया तो ये इतनी जल्दी फैलता था लोगों में कि एक जगह पर कोई अगर व्यक्ति है तो विद इन 2 आवर्स वो 8 से 10 लोगों को उसी जगह पर अगर वो लोग हैं तो उनको इन्फेक्ट कर देगा। मूविंग ऑन, ओमिक्रॉन B11529 इज अ वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में मैं और ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। नेटवर्क फॉर जीनोम्स सर्विलियंस हैड फर्स्ट रिपोर्टेड दिस वेरिएंट इन साउथ अफ्रीका इन नवंबर 2021। रिमेंबर व्हेन, नवंबर 2020। कहां पर सबसे पहले आया था? साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, कई लोग, मैं आज आपको गलतियां बता रहा हूं आप लोगों की। रिमेंबर दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, reported in South Africa, it doesn't mean it came in South Africa the first time. It might came in some other country and it is possibility that वहां से कोई इंसान साउथ अफ्रीका गया and then that thing came into light कि यार साउथ अफ्रीका में ये चीज पाई गई। It doesn't really give a surety कि साउथ अफ्रीका में ही ये डेवलप हुआ। It is not like that. Okay, remember this thing. Moving on. Apart from original BA1 variant, many sub variants which is BA2, BA3, BA4 and BA5 have emerged over time. Okay, right. In order to protect against severe diseases, hospitalization caused due to BA1, BA2 variants of Omicron, 3 doses of COVID-19 vaccines are provided. 3 डोज आपको पता ही है, पहला, दूसरा बूस्टर डोज और तीसरा भी हम फॉर सिक्योरिटी लगाते हैं। बहुत इंडिया में पहला तो 90% लोगों ने लगाया, दूसरा 50-60% लोगों ने लगवाया और तीसरा खाली मात्र 12% या अब जाके 16-17% लोगों ने लगवाया, विच इज रॉन्ग। आपको जाके ये थर्ड वाला वैक्सीन भी लगवाना चाहिए। BA4 and BA5 variants are more infectious as compared to other subvariants. Obviously, देखिए क्या होता है, many times people ask why this corona is again and again coming. से क्या होता है, कोई भी वायरस हो दुनिया में, कोई भी वायरस हो, वो वायरस जब बॉडी के अंदर जाता है, जब लोगों के अंदर जाता है, तो कई बार कई इतने करोड़ों की जनसंख्या में कई लोगों में कुछ इन्फेक्शन, कुछ वायरस ऑलरेडी होते हैं। अब ये वायरस जब उस बॉडी में जाता है तो कोरोना, मान लो ओमिक्रॉन वायरस उस व्यक्ति के अंदर गया, अंदर जाके वो दूसरे वायरस से मिला, अरे हेलो 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 मेरा नाम ओमिक्रॉन है, लेट्स हैव फ्रेंडशिप, एंड उसके साथ वो फ्रेंडशिप करके और स्ट्रॉन्ग एक वायरस बना देता है और फिर वो वायरस बाकी लोगों में स्प्रेड होता है। ठीक है, वायरस इस तरीके से काम करते हैं। वायरस को आप क्या समझ रहे हैं, एक राक्षस टाइप है, वो राक्षस ही है जो फैल के लोगों को मार रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सबसे पहले कमजोर गया, कमजोर जाके दूसरे वायरस से मिला और ताकतवर हुआ, फिर ये वायरस जब और दूसरे इन्फेक्टेड बॉडी में गया जहां पर ऑलरेडी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर और दोस्ती कर ली और घातक हुआ। तो ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला है। आप सोच रहे हो ओमिक्रॉन लास्ट है, इसके बाद भी और वेरिएंट्स आते रहेंगे। हमारे लाइफ में कोरोना एक ऐसा जैसे सर्दी जुकाम जैसा बनके रह जाएगा। ठीक है, आई एम टेलिंग यू लाइक दैट। मूविंग ऑन, हमारा सेकंड करंट अफेयर, इंडिया पंच प्रण टारगेट फॉर नेक्स्ट 25 years. Our Honorable Prime Minister Modi's Independence Day speech focused on Panchapran 5 resolves to ensure a developed India in next 25 years. आने वाले 25 साल, आने वाले 25 years में हमारा टारगेट है कि हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाएं। So what are the 5 resolves given by PM? हाँ, आप इनको जरूर नोट कर सकते हैं if you want, है ना, नहीं तो अगर आप याद कर सके, मेरे साथ समझ सके तो well and good, कोई जरूरत नहीं लिखने की। Take pride in India's history, the power of unity, duties of citizens such as those of PM and CMs, advance with greater conviction and determination of a developed India, get rid of any signs of slavery. सिंपल से पॉइंट से इनको लिखना हो आप लिख सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन अगर देख के आपको समझ आ रहा है, नो नीड ऑफ राइटिंग।
ओके, टेक मतलब यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर और हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो 13th सेंचुरी से 12th सेंचुरी से जो इन्वेजन होते आए हैं, चाहे वो इस्लामिक इन्वेजन हो, ब्रिटिश इन्वेजन हो या फॉरेन कोई भी इन्वेजन हो, दे वांट यू to see those history, they want you to see history beyond that, कि we were the rich, we were the rich country, all invasion mostly happened in India. This is what government lookout is, and they want you should be proud of our Indus Valley civilization, you should be proud of our any heritage site, you should be proud कि हमारी हिस्ट्री इतनी अच्छी थी. वी शुड नॉट कॉपी वेस्टर्न कल्चर, वी शुड नॉट कॉपी एनी अदर कल्चर. आवर कल्चर इज ऑलरेडी वेरी रिच and it is very true. आप देखिए nowadays what is happening, we are many of the people are copying western culture. See, I am not against of any culture, but let me tell you one very interesting thing. Adoption of a thing is another thing, but copying of something is totally different. मतलब अगर आप किसी चीज को अडॉप्ट करते हो कि आप पूरी तरह वो चीज मान रहे हो, then it's very good, no issues in it. But when we are copying something, then it becomes problematic. Like I won't go in deep, हम बाहर चले जाएंगे टॉपिक के, but this is what our government is trying to say कि हमारा कल्चर बहुत rich and you should be proud of it. You should be proud of our unity, हमारी एकता. Duties of citizen, what are the duties of citizens? You should be proud of your country, you should respect the flag, all the fundamental duties, more duties, you should help each other, है ना, like that. So this all what government is trying to convey, this message is what government is trying to convey. Moving on, now let's get brief into it. First pran, the first vow or promise or pran in Hindi is for the country to move ahead with a big resolve, what it is, and that big resolution is of developed India, and now we should not settle for anything less than that बिग रेजोल्यूशन. लास्ट करंट अफेयर में मैंने आपको क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ाया था, समझाया था. क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ था? कांग्रेस ने क्या बोला था कि नहीं, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट इंडिपेंडेंस. दैट टाइम ये रिजोल्यूशन था. आज की डेट में क्या रिजोल्यूशन है? वी डोंट वांट एनीथिंग लेस देन बीइंग डेवलप्ड. दिस इज अ बिग रिजोल्यूशन. सेकंड प्रण और सेकंड वॉव, द सेकंड प्रण इज दैट इन नो पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, नॉट इवन आवर डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ आवर माइंड और हैबिट्स should there be any ounce of slavery. It should be nipped there itself. देखिए कई जगह आज भी स्लेवरी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ. स्लेव्स मतलब नौकरी, नौकर नहीं बोलेंगे उनको, बट खरीद लेना इंसान को, स्लेवरी. बट हम उस वाले टॉपिक पे नहीं जाते हुए ब्रिटिश रूल की हम बात करते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं वी फॉलो मेनी ब्रिटिश थिंग्स. लाइक we still were following the navy flag which was given by British. We were still having that flag. Recently we have changed that. I have covered in our last current affair, last to last current affair. You can watch that video also. I will give it the link in description. But this is what our government, this is what our people, most of the majority of people are trying, that we should come out of our slavery phase and we should develop our own existence, which we are doing very well. Moving on, our third pran. What is the third pran? The third pran is that we should feel proud of our heritage and legacy. It is the rich heritage that transcends tests of tide and times. It embraces the new, and hence we should be proud of this heritage. हमको उसका प्राउड होना चाहिए कि हम इंडिया से हैं. Many a times we criticize, not I'm not considering everyone, but many people criticize that population is a problem of India, we are not getting developed. They just complain. Why are you complaining? You should not complain. In spite of that, you should take part in our growth. You should do something for the country, जिससे आपकी country, जिससे हमारी country और grow हो. Complaining is never a solution of anything. Remember this thing. आपको कंप्लेन नहीं करना चाहिए. इफ यू आर डूइंग यूपीएससी, इफ यू गिव कंप्लेन यार आई एम इन दिल्ली और आई एम इन माय हाउस, wherever you are, you just complain. Suppose you are in Delhi. Okay, you are in Delhi, you are in hostels. Oh my god, my food is really bad and because of the food I am not able to study. You are saying that, you are complaining. And maybe if you are in home, oh my god, there are many family issues and because of that I am not able to study, or any other problem, you are just complaining and complaining, and you are complaining and telling that because of this I am not able to study. दिस इज नॉट, दिस इज स्टूपिडिटी. ठीक है, आपको कंप्लेन नहीं करना चाहिए, आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए. इफ योर फूड इज बैड, चेंज द फूड.
take some fruits, have some fruits, eat good, have fibrous foods. If you are in family, you are having family problems, don't get involved in it until and unless there is very much need of yours. Okay, so have solutions in your life, don't complain. And this is what our third pran is trying to say, or ki we should be proud of our heritage, है ना, our legacy. Okay, our fourth print, which is equally important as unity and solidarity amongst 130 million countrymen. When there is harmony and bonhomie, unity becomes strongest virtue. Ek bharat shresth bharat, remember, you can quote this in your answer, is one of the unifying initiatives to actuate the dream of fourth print. Okay, ek bharat shresth bharat. Moving on, our fifth print is the duty of citizens, in which even prime minister, chief minister cannot be an exclusion. It's our duty to respect, to make contribution for the development of our country. Okay, moving on, as they are also responsible citizens, we are talking about prime minister and chief minister, and have a duty towards the nation. This virtue is going to be the vital life force if we want to achieve the dreams we have for the next 25 years. Moving on, US Inflation Reduction Act 2022. Okay, this is very important current topic in terms of your international relations, because हमको सिर्फ हमारी गवर्नमेंट स्कीम पे कई बार ध्यान नहीं देना होता है, दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज और इम्पैक्टफुल कंट्रीज, रिमेंबर माय वर्ड, इम्पैक्टफुल कंट्रीज, है ना, इम्पैक्टफुल कंट्रीज का भी स्कीम्स को याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना चाहिए? बिकॉज उनका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे भी कई बार पड़ जाता है किसी ना किसी वे में, भले छोटा पड़े या बड़ा पड़े। नाउ व्हाई दिस यूएस सीनेट अप्रूव्ड अ बिल टाइटल्ड द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट IRA 2020? लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हैव यू एवर थॉट व्हाई डॉलर इज ऑलवेज कंपेयर्ड विथ एवरी करेंसी? वी हैव ऑलवेज सीन दैट वी ऑलवेज कंपेयर आवर रूपी विथ डॉलर। व्हाई डॉलर, व्हाई नॉट दिरहम, व्हाई नॉट एनी अदर करेंसी, है ना, ऐसा क्यों है कि हम डॉलर के साथ? सो लेट मी टेल यू इट्स हिस्ट्री। वैसे इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बन सकता है, बट मैं आपको इसी में बता देता हूँ। लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, इनिशियली अमेरिका वाज नॉट ईदर साइड, किसी साइड पे नहीं था अमेरिका। सो उन्होंने क्या करा, वेपन सप्लाई करना लगे, लेकिन उन्होंने दूसरी कंट्रीज से ये बोला कि देखिए भाई साहब, हम आपको वेपन्स तो बेचेंगे, लेकिन या तो आप डॉलर में हमको पे करो, या तो फिर आप हमको गोल्ड में पे करो। मैनी ऑफ द कंट्रीज इमीडिएटली उनको वेपन्स चाहिए थे, तो उन्होंने गोल्ड दिया, एंड मैनी कंट्रीज परचेज वेपन्स फ्रॉम अमेरिका। इसमें क्या हुआ कि 40% ऑफ, अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ गोल्ड अमेरिका चला गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अगेन द सेम थिंग रिपीटेड। नाउ 75 और 70% अप्रोक्सीमेटली गोल्ड कहाँ आ गया, वर्ल्ड का, अमेरिका आ गया। नाउ एवरी कंट्री आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर रियलाइज्ड कि यार ये अमेरिका गेम खेल रहा है। सो अमेरिका ऑल्सो रियलाइज कि यार बाकी कंट्रीज को पता चल रहा है। व्हाट दे डू, दे एंटर्ड इन ऑयल सेक्टर। वो अब ये गोल्ड वेपन्स छोड़ के, मतलब चल रहा है उनका, ये तो चल ही रहा है, इसके अलावा वो ऑयल सेक्टर में जंप करे। उन्होंने देखा कि यार ये ऑयल सेक्टर इज गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग थिंग इन फ्यूचर। मतलब उसी समय काफी ऑयल लोग परचेस कर रहे थे, लेकिन अगर उस समय इतना करें तो आगे कितना करेंगे। यू नो, आज हम डीजल पेट्रोल के बिना हमारा काम नहीं हो सकता। हमारा पेट्रोल या डीजल एक दिन भी देश में बंद हो जाए, आपका इन्फ्लेशन बूम मार जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, चीजें पहुंचेंगी नहीं टाइम पे, और जो चीजें अवेलेबल है उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में आप ये चीज पढ़ेंगे। खैर, तो उन्होंने ऑयल पकड़ा। क्या पकड़ा, जितने भी ऑयल वाली कंट्रीज थी, ईरान, इराक, सऊदी अरब, सब जितनी भी कंट्रीज थी, वहां पर ये गए, इन्होंने उनसे बात करी और उनको कन्विंस करा कि भैया आप बेचो ऑयल पूरी दुनिया को, नो इश्यूज, लेकिन आप डॉलर में बेचो, आप डॉलर में बेचो, आप उनको बोलो कि आप डॉलर में परचेज करो। एंड मैनी कंट्रीज मान भी गई, हाँ ओके डन। और इसलिए डॉलर्स की प्रिंटिंग बढ़ी, डॉलर्स का रेट बढ़ा, और पहले किसी भी कंट्री को ऑयल लेना होता तो पहले वो अमेरिका जाते, डॉलर्स खरीदते, और फिर जाके ऑयल लेने जाते। तो ऐसे में डॉलर्स एक इंटरनेशनल करेंसी बन गया। ये था आपका एक शॉर्ट में डॉलर क्यों एक इंटरनेशनल करेंसी है उसके बारे में। मूविंग ऑन, सो ये क्या है इन्फ्लेशन, आज देखते हैं। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। So this act was passed to control inflation in US by lowering defect prescription drug prices and by investing in domestic energy production. Okay, very good. With this, it joins hands with central bank to decrease inflation. Okay. It marks the largest American investment aimed towards making the US a leader in clean energy. Okay. आपको पता होगा ग्रीन GDP भी एक चीज होती है,
ठीक है, जीडीपी तो होता ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन ग्रीन जीडीपी भी एक चीज होती है। इसके बारे में भी हम आगे आगे या फिर किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, या आप पढ़ेंगे ही सही बिल्कुल इकोनॉमिक्स में। Okay, it aims to bolster the domestic production of heat pumps and critical materials and make more investments in fossil fuels. Getting moving on. Now, what are the provisions of it? Provisions. Inflation Reduction Act is aimed at increasing government revenues by around USD 737 billion. It will also spend USD 437 billion for the period of 2022-31. मतलब तकरीबन 10 साल. This will lead to saving USD 300 billion, ultimately lowering the deficits. The IRA has a special focus on climate, healthcare, tax provisions to address inflation. Very good. It will also make large expansion and modernization efforts in internal revenue services. Okay, very nice, very good. Moving on. Okay, more. There is more. It provides a tax deduction to low and middle income households to go electric and seeks to lower the energy bills of American households. Very nice. For disadvantaged low-income communities and tribal communities, the bill provides funding to benefit from zero-emission technologies which reduce greenhouse gas emissions, enhance climate resilience, and mitigate risk from extreme heat. Significant investment in renewable energy through heavy tax credits for wind and solar energy products and electric vehicles. Very nice. बहुत अच्छे अच्छे steps लिए. We should government और इनमें से कोई point सीखने लायक हो तो हमको जरूर implement हमारे country में करना चाहिए. Moving on. The bill imposes a tax on the largest and most profitable companies in order that they pay their fair share, okay, without levying any tax on households with income less than $40,000 per annum. Dollar, okay, or वो भी per annum. It also imposes a fee on methane leaks from oil and gas drilling. It seeks to expand oil and gas drilling, with the federal government offering land for onshore and offshore drilling as per prerequisite for developing renewable energy. Now, what is to be noted? It was cleared as an amendment to Build Back Better Act. ये एक amendment है, okay? It's not कि अभी अभी लेकर आए. Amendment है, कोई act था उसमें सुधार है. Amendment का मतलब होता है सुधार. It also substitutes legislative text. Okay, very nice. Good. Moving on. Our next current affair. ठीक है, ये आपका आर्टिक एम्प्लीफिकेशन या आर्टिक वार्मिंग कह लो, जो कि आपकी जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से है. नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस. ये क्या है? ठीक है, फिनिश रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द आर्टिक इज हीटिंग 4 times faster than rest of the planet. Arctic is heating 4 times faster than rest of the planet. Okay, interesting. Let's read. क्या है ये? So, Arctic is warming faster. Why? The warming is concentrated in Eurasian part of the Arctic. Okay, where the Barents Sea north of Russia and Norway is warming at an alarming rate. Alarming मतलब चिंताजनक. 7 times faster than the global average. 7 times. देखिए इसको ना आप जरा जरूर मैप में वर्ल्ड मैप खोल के देखिएगा. यहाँ की बात हो रही है ऊपर ऊपर. ठीक है, इतना बड़ा तो रशिया ही, इधर नॉर्वे, इधर. ठीक है, moving on. Other studies indicate that the Arctic amplification is 4 times of global rate. Okay, in last 43 years, Arctic region has heated up 3.8 times faster than the planet. See, यहाँ पर ऐसा नहीं है टेम्परेचर की बात. आप टेम्परेचर में इसको लो कि यार हमारे यहाँ तो कहीं इंडिया में कहीं ऐसी जगह जहाँ पर 45 डिग्री तक चला जाता है गर्मियों में, तो क्या आर्टिक में भी जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं. कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं कि हर साल एक एवरेज आपके यहाँ 45 पहले था, 40 42 43 44 45 हुआ पिछले 100 साल में. तो आर्टिक में अगर माइनस में कोई था टेम्परेचर सपोज 40, तो वो इंस्टेंटली, आई एम टेकिंग एग्जांपल, डोंट कोट मी ऑन दैट कि यार वहां तो और ज्यादा कम है, आपने उससे 40 बोला है, 70 है वहां तो माइनस, ऐसा नहीं. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. मान लो वहां पे -40 है, तो इट्स गेटिंग फास्टर -30 35 ऐसा हो गया है वहां पर. इट्स गेटिंग फास्टर हीट, है ना, वो जल्दी हीट अप हो रहा है इन कंपैरिजन टू ग्लोबल हीट. ओके, मूविंग ऑन.
Let's read more about it. So Arctic amplification. Global warming has hastened due to anthropogenic forces or human activities since pre-industrial times and has increased planet average temperature by 1.1 degree Celsius. Okay, very good. Not very good नहीं, इसमें तो very bad बोलना चाहिए, very bad. While changes are witnessed across the planet, any change in the surface air temperature and net radiation balance tend to produce larger changes at north and south poles. This phenomenon is known as polar amplification or Arctic amplification. Okay, very easy. Remember this thing. इसमें ज्यादा याद रखने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन इतनी सी चीज, ग्लोबल हीटअप जितना हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पूरे ग्लोब में, उससे ज्यादा तेजी से पोल्स में हो रहा है. उसके पीछे का रीजन क्या है वो और ज्यादा डीप में आप ज्योग्राफी में जरूर पढ़ेंगे. मैं इसमें जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है और लंबा हो जाएगा. Moving on, the region is heating faster than other parts of the earth. This is because among the many global warming driven cause for this amplification, the ice albedo effect, देखो ice albedo effect आप पढ़ोगे, feedback, lapse rate feedback, water vapor feedback and ocean heat transport are the primary cause. These are primary causes. Okay, remember what are the primary causes? These are, you can write it or you can take a screenshot of it. Sea ice and snow have high albedo, implying that they are capable of reflecting most of the solar radiation as opposed to water and land. Okay, moving on. In the Arctic case, global warming is resulting in diminishing sea ice. As the sea ice melts, the Arctic Ocean will be more capable of absorbing solar radiation, thereby driving the amplification. The ice albedo feedback and lapse rate feedback are responsible for 40 and 15% of polar amplification respectively. Very good. Okay, moving on. Now, what are the consequences? So, the causes and consequences of Arctic amplifications are cyclical. What might be a cause can be consequences too. The Greenland ice sheet is melting at an alarming rate, and the rate of accumulation of sea ice has been remarkably low since year 2000. Okay. If the sheet melts completely, the sea level would rise by 7 meters, capable of submerging island countries and major coastal cities. मतलब पानी भरा जाएगा ना, अगर पिघलेंगी ग्लेशियर्स वगैरह तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, है ना. मूविंग ऑन. The warming of Arctic Ocean and the seas in the region, the acidification of water, changes in salinity levels, in impacting biodiversity, including marine species and dependent species. The permafrost in Arctic is thawing and in turn releasing carbon and methane, which are among the major greenhouse gases responsible for global warming. Experts fear that the thaw and the melt will also release the long dormant bacteria and viruses that were trapped in the permafrost and can potentially give rise to diseases. साइंटिस्ट और इन लोगों का कंसर्न ये है कि जो हो सकते हैं कुछ डिसीज, कुछ वायरसेस इन आइस में फंसी हुई हो, जमी हुई हो, वो ना पिघल के यहाँ पर आ जाए, वरना और डिसीजेस ह्यूमंस में फैल सकती है. मूविंग ऑन. इम्पैक्ट ऑन इंडिया. इंडिया पे क्या इस चीज का इम्पैक्ट होगा? तो इन रिसेंट ईयर्स साइंटिस्ट हैव pondered over the impact the changing Arctic can have on monsoons in subcontinent. A study says that reduced sea ice in Barents-Kara Sea region can lead to extreme rainfall events in latter half of monsoon in September and October. The changes in atmospheric circulation due to diminishing sea ice combined with warm temperatures in Arabian Sea contribute to enhanced moisture, drive extreme rainfall events. Okay, भाई ज्यादा पानी होगा, ज्यादा evaporation होगा, ऑलरेडी गर्मी है, and because of that ज्यादा बारिश होगी. So our next current topic, नमस्ते scheme. So नमस्ते people, हम नमस्ते स्कीम पढ़ने जा रहे हैं. What is this? The government has developed the नमस्ते scheme to clean septic tanks and sewers. मतलब नाली, देख रहे होगे ना आप, ये लोग अंदर, ये नाली के अंदर है. Government formulates नमस्ते scheme for cleaning of sewers, septic tank. ओके, समझ आपको यहीं से आ रहा है, लेकिन और ब्रीफ में इसको समझना थोड़ा जरूरी है. मूविंग ऑन. सो व्हाट इज नमस्ते स्कीम? So it launched in 2022 as central sector scheme. It aims to eradicate unsafe sewer and septic tank cleaning practices. कई लोगों की डेथ होती है यार इस चक्कर में, कई लोगों की डेथ होती है बिकॉज विदाउट एनी प्रोटेक्शन वो नाली में नीचे अंडर सीवेज जाते हैं एंड वहां पर इतनी गंदगी होती है जिसकी वजह से उनको वेरियस डिसीजेस हो जाती हैं एंड उनकी डेथ हो जाती है.
सो इस चीज को कम करने के लिए, इवन इस चीज को खत्म करने के लिए नमस्ते स्कीम लाई गई है। मतलब ये हमारा पहला इनिशिएटिव है ना। इट इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ MOSJE, Ministry of Housing and Urban Affairs. The scheme seeks to provide safety and dignity to sanitation workers across urban India by erecting an enabling ecosystem to recognize sanitation workers a significant contributor in maintenance and operation of sanitation infrastructure. Okay, objective of the scheme. So, zero fatalities in sanitation workers in India. Okay, no sanitation workers come in direct contact with human facial मतलब इस जो हमारा ह्यूमन वेस्ट होता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई वर्कर नहीं आएगा, सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है। Sanitation workers are collectivized into self-help groups and are empowered to run sanitation enterprises, strengthened supervisory and monitoring systems at national, state and urban local body ULB levels to ensure enforcement and monitoring to safe sanitation work. ठीक है, डायरेक्ट नाली में डालने जाने से आप कितना ही फिर अपना हाथ पाँव कुछ साफ कर लो, उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपके नाखून के अंदर, आपके जॉइंट्स में कहीं ना कहीं तो रह ही जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट इज सेइंग दैट नो वर्कर विल कम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ह्यूमन फीकल मैटर। ओके, मूविंग ऑन। सो to open up access to alternative livelihoods to all sewer and septic tank sanitation workers, increased awareness among sanitation services seekers, individuals and institutions to seek services from registered and skilled sanitation workers, to provide for sanitation workers to train for and go into any of the approved list of alternative occupation in the sectors like agriculture, services, electronics, assembling and handicraft and so on. Okay, now what are the key features of the scheme? Now, benefits under the scheme will include capital subsidies of up to 5 lakh on sanitation machinery costing up to 15 lakh and interest subsidies on loans, where interest rates will be kept between 4 to 6% for beneficiaries, with the government taking care of rest of the interest. The scheme will also provide for training the workers or use these machines, during which time stipend of up to 3,000 per month will be provided. See क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको समझा दूं क्लियर शब्दों में, शॉर्ट में। गवर्नमेंट मैन पावर हटा के मशीन पावर लगाने वाली है, तो मैन पावर कम होगा। अब वो लोग क्या करें जिनका कमाई इस चीज से, तो उनको एग्रीकल्चर सेक्टर, लेबर सेक्टर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बेसिकली ये कहा गया पिछली 3 स्लाइड्स में। मूविंग ऑन, the scheme seeks to provide sanitation workers a sustainable livelihood and enhance their occupational safety besides increasing access to safety gear and machines. It aimed to providing access to alternative livelihoods, support and reducing the vulnerabilities of sanitation workers. It would also bring about behavior change among citizens towards sanitation workers and increase demand for for safe sanitation services. Okay, moving on, our next current affair, PFAs or forever chemicals. Now, what is PFAs or forever chemicals? A recent study found that rainwater from many places across the globe is contaminated with per and polyfluoroalkyl substances. Now, what it is? Let's get brief into it. So, what is PFAs? According to US Center for Disease Control and Prevention, PFAs are man-made chemicals used to make non-stick cookware, water-repellent clothing, stain-resistant fabrics, cosmetics, firefighting foams, and many other products that resist grease, water, and oil. Now, these are polyfluoroalkyl substances, were first developed in 1940 and refer to a group of over 3,000 widely used human-made chemicals linked to cancer and other health risks. और deep में जाते हैं इसमें. They are called forever chemicals because of their tendency to stick around in the atmosphere, rainwater and soil for long periods of time. They can migrate to the soil, water and air during their production and use. Since most of the PFAs do not break down, they remain in the environment for long period of time. Some of these PFAs can build up in people and animals if they are repeatedly exposed to the chemicals. इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉन स्टिक पैन वगैरह यूज करना बंद करते हैं, ऐसा नहीं है। उनको जब बनाया जाता है उस समय इसका यूज होता है। मूविंग ऑन, नाउ व्हाट आर द हेल्थ रिस्क? डिक्रीज्ड फर्टिलिटी, developmental effects in children,
interference with body hormones, increased cholesterol levels, and increased risk of some cancers. Okay, moving on. Recent research has also revealed that long-term low-level exposure to certain PFS can make it difficult for humans to build antibodies after being vaccinated against various diseases. यार अब डिसीज अंदर चली जाएगी जो आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर देगी, और ऑर्गन्स को वापस से ठीक करना, रिकवर करना इज नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स वेरी टिपिकल. ओके, मैं अगर आपको बात कर लूँ फैटी लिवर, और फैटी लिवर के बाद सिरोसिस होता है, लिवर सिरोसिस. आपको क्या लगता है कैंसर, लिवर सिरोसिस कैन बी क्योर्ड? नो, इट कैन नॉट बी क्योर्ड. ओके, it is very very tough to be cured and it take a lot of time and efforts. So this is also one of a major concern कि ये जो केमिकल्स हैं ये जब इन्वायरमेंट में जाते हैं, इवापोरेट होते हैं, रेन वाटर के थ्रू फिर आते हैं एंड उस पानी को हम कंज्यूम करते हैं, तो उससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. डिक्रीज फर्टिलिटी है ना, जो डेवलपमेंटल होता है इफ चिल्ड्रंस में एक तरीके से गुड डेवलपमेंट होता है, वो ना होते हुए उनको ब्रेन में प्रॉब्लम, जिस तरीके से डेवलपमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, ग्रोथ में प्रॉब्लम हो, इस तरीके की बात है. ओके, moving on. How can these chemicals be removed from rainwater? Now this is a good question, this can be asked. Okay, so answer, while there is no known method that can extract remove PFS from atmosphere itself, there are many effective albeit expensive methods to remove them from rainwater that has been collected through various rainwater harvesting method. One of the way to do this would be use of filtration system with activated carbon. The activated carbon will need to removed and replaced regularly. Also, the old contaminated material must be destroyed. So, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैंने जितना चित्रा है उसके पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा so that आपको अच्छे से समझ आए. So this was our current affairs session. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. And if you liked it, please make sure to like this video. Again, I will tell you if you have any doubt. मैंने अभी भी कुछ doubts इस वीडियो में कवर करे हैं. हम आपको personally भी आपके doubts को clear करेंगे. Don't worry, you can ask any of your doubt regarding UPSC, PSC's exams. Follow us on Instagram, Telegram, and you can ask anything on our WhatsApp. You can directly call us on that. Till then, read properly, prepare for examination, do your level best, and all the very best from our team, from Exact Test team. We'll meet very soon in next video.